Our long series is heading to its grand finale. All teams started their journey from Madai and have reached Jabalpur to spend the night. Please छोड़ दीजिए, हनी राम कोई है? With only 1,500 rupees and over 800 kilometers to cover, teams are on their own without any help. In order to complete the race, today our teams will drive another 400 kilometers to finish the race. En route, they will get clues at various pit stops like the famous Dhuandhar Falls at Bheda Ghat. Okay. Oh my God. Good morning. Today is the last leg of your adventure. Before you hit the road again. Clean your car in a bright way. And have your breakfast. Yes. We'll tank up on the breakfast too. To then head for the day to the place where... On a moonlight night on a sacred river. It's walls of rocks, shinier and shine. Whitest marble, they look heavenly. As water turns into smoke at the falls. A few minutes away from your place, on the ghats of these white rocks. I'm waiting for you to get ahead today. We have to first clean the car and then we have to reach a place where water turns into smoke. That was weird. We shouldn't be washing cars. पानी कहीं से मिल रहा है? गाड़ी साफ करनी है. The first thing we were told was we had to clean the car. That's what. तो कपड़ा चाहिए था. मेरी गाड़ी, मेरी बाइक जो भी है, मैं खुद ही साफ करता हूँ. तो मेरे को इसमें कुछ नई बात नहीं है, बिकॉज़ मैं किसी और को करने नहीं देता. भैया, मैं एक पानी ले लूँ. My father would be so proud of me. It's like, साले जिंदगी में कभी गाड़ी धोई है? टीवी पे तो गाड़ी पे गाड़ी धोई यार. It seems I can take this to wash the car. Thank you, भैया. Let's have to the front. Yeah, we can use that also. No? You use one, I'll use one. Okay. When I asked for water, there was a tank. So we had to get the water from there. We did wash our cars. We were completely self-dependent. We did manage to clean it in a really good way. ब्रेकफास्ट करेंगे. और ये है गुलाब जामुन जो रास्ते में कल हमने एक लाल फैमिली से लिए. भैया गुलाब जामुन तो हम ही खा रहे हैं. The next clue was for Dhuandhar Falls. So if you translate it in Hindi, smoke means धुआं. So we figure out it's Dhuandhar Falls. It was not very difficult to decipher कि ये clue क्या है. This is Bheda Ghat. Our three teams will get to the finishing line, the wonderful temples of Khajuraho, only if they crack the clue that they get here. So let's catch up with them and find out how they're doing. भैया बेड़ा घाट. We did do highway driving. Obviously, we had our limitations in terms of the speed. While the White Knights and the Midnight Thrillers hit the road, the Lightning Challengers started their day of judgment on a different note. We were very excited to see the temple and hopefully हमें थोड़ी अच्छी blessings भी मिलेंगी. Exactly, to start our day. God's blessings on our side and now we're ready to hit the road. En route, we saw a few shops open and we just went across to the shopkeeper and we asked the ladies, "आप हमें एक bread free में दोगे?" They were like very friendly and helpful. They gave us a loaf of bread. बहुत बहुत शुक्रिया. And first, the job at hand. One single focus for all the teams. Breakfast, if you please, which they all managed in their own clever way without spending any money. नाश्ता हो गया, गाड़ी की सफाई हो गई, रास्ते के लिए थोड़ा पानी और चॉकलेट भी मिल गया. Some very sweet guys we met today. उन्होंने रास्ता भी बता दिया कि exactly कहाँ जाना है. So we headed towards right there. हम of course थोड़ा late है, तो अब और late नहीं होना. Let's make some good time.
उधर भेड़ाघाट का और कोई शॉर्टकट नहीं है, तो फिर 2 रास्ते अपने आए तो वो रास्ता मेरे को याद है। अंकल जी नमस्ते, हम लोग एक रोड शो कर रहे हैं, सो आपके घर में अगर कुछ नाश्ता बना हो, इफ़ यू ऑल कैन कुछ भी सर्व अस सम नाश्ता, इट विल बी ग्रेट। They were busy in sending their children to school, so she did offer us some biscuits and they gave us jam and all that. Thank you, thank you. Yeah, we got jam and biscuits. Yeah. Yeah, we're done with the breakfast now. We're heading. धुआंधार कैंटीन यहाँ पार्क करके, ये पार्किंग है। धुआंधार फॉल पहुँचने में भी हमें ज़्यादा वक्त लगा नहीं। भैया सुभाष जी का धुआंधार कैंटीन कौन सा है? Then at a point we couldn't take our car further. कैंटीन वो होगी ना उधर। The Midnight Thrillers and Keep the White walking, keep Knights walking. didn't take too much time to reach the first location, while the Lightning Challengers had a lot of ground to cover. Thank you. Time to head far. Our final destination awaiting to shower glory on the winner. It's a quaint town famous in the world for temples that take your breath away, built by the mighty Chandelas more than 1,000 years ago. When we reached that point, we got our clue. Just tailing behind us were the Midnight Thrillers. So we were like, okay, we have to move out fast from here. धुआंधार कैंटीन में संतोष जी मिले, उन्होंने नेक्स्ट क्लू दिया, which was clearly written, you have to head towards the city which has a lot of temples made by Chandel Raja. एक शहर है जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। खजुराहो है वो। हैं? खजुराहो। हमें मालूम था कि ये जगह खजुराहो है, क्योंकि उसमें एक चीज़ और लिखी हुई थी कि you have to reach this place via Damo. That place was very scenic. It was more like the Indian part of Niagara. Even though it's a race against time and teams are competing to finish first, the White Knights and the Midnight Thrillers couldn't resist the temptation of enjoying the scenic waterfalls at Bheda Ghat. दिन की शुरुआत हुई है वैसा लग रहा है, तो मजा आ रहा है। अगर हमने खजुराहो या दमोह जाना है, दमोह होते हुए दमोह जाना है। हाँ जी, तो रास्ता कौन सा लेंगे? आप यहाँ से जाइए, हाँ। बाईपास चले जाएं। कटंगी का रोड पूछ लें। तो कटंगी का रोड, मतलब यहाँ से अगर जाएंगे बाईपास पड़ेगा, हाँ। बाईपास से इस तरफ टर्न ले लीजिएगा। लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है भैया। So now the task was to find out Damo and then खजुराहो। यहाँ पे कोई मंदिरों के लिए कोई जगह फेमस है क्या? खजुराहो है ना? That clue told us that you know we could decipher and we figured out that we had to come to Khajuraho. The Lightning Challengers covered lost ground well, but they are still third amongst the teams and it is a long road ahead. Dhuandhar Falls is where we thought it'll end, but oh, bam, comes another clue on your face. And it says you have to go to Chhatarpur district to find some Chandela dynasty temples. चंडेल राजाओं ने मंदिर कहाँ बनाया था? दमोह से होके जाएगा। तो यहाँ से हम कौन सा रास्ता लें? भोपाल वाला? नहीं, ये आपको लेना पड़ेगा कटनी रास्ता। So we're going to Damoh. We're actually going to Chhatarpur, but we drive through Damoh. पहली बात तो ये है कि हमें दमोह जाना है। उस वहाँ जाकर हम विल सी कि ऐसा ना हो कि किसी और टेंपल की बात कर रहे हो, क्योंकि वैसे खजुराहो टेंपल्स बाय द वे दे वर मेड बाय द चंडेलास। भैया दमोह के लिए बाईपास से रास्ता है? हाँ, बाईपास से। दमोह जाएगा? We knew that it will be in Chhatarpur district और कहीं नहीं हो सकता। ये अच्छी बात थी कि हमने छतरपुर की तरफ चलने लगे और रास्ते में लोगों से पूछते रहे। अरे आप जब हाईवे सीधा जाएंगे ना, तो बाईपास के बाद में आप जैसे बिल्कुल ये रोड आपको खत्म होगा ना, फिर और आपको बाईपास मिलेगा, तो आप वहाँ फिर पूछ लीजिए। दमोह जाना है, दमोह। यहाँ से जाओगे ना, दूसरा चौगट्टा पड़ेगा। अच्छा, छतरपुर का रास्ता कौन सा है? ये बाहर से निकल जाओ ना सीधा, इससे ना? तीन गुल्ली जाओगे, तीन गुल्ली से जाओगे राय चौराहा। ठीक है। राय चौराहा से सीधा पलंदी चौराहा होते ही निकल जाना। भैया दमोह क्या जाना है? दमोह बाईपास उधर से है ना? स्ट्रेट जाना है। उधर टोल है, बाईपास जाना। We have to go by the bypass. The one thing which no team could afford was to go wrong. And that's exactly what happened with the White Knights. Their one misguided U-turn
gave the much-needed advantage over to the Lightning challengers. आधे रास्ते पहुंच के पता चला कि वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। किसान चक्का जाम चल रहा था। किसी और कोई रास्ता नहीं है। तो पता चला बेटा लग गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। And the winner is